Students, my name is Sagar Pandya and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with one of the most interesting and one of the most beautiful chapter of our syllabus, one of my favorite, that is chapter number 4 of political science, that is Contemporary India, Challenges to Peace, Stability and National Integration, the next part. Let's begin. Alright, so coming to the next part, learning about challenges. Now, one of the first challenges that India faced after independence. Now, when did we get independence? 15th of August 1947. After India got independence, the first important part was integration. Now, what is integration? Integration मतलब inclusion. किसका? Princely state का. जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, अभी उनको ऑर्डर दिया था, उनको ये एक ऑप्शन दिया था, दैट इज उन लोगों को अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो जितने भी प्रिंसली स्टेट है, मतलब वहां के जो किंग्स रहेंगे, दे विल बी हैविंग अ राइट और दे विल बी हैविंग एन अथॉरिटी टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पार्ट एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन ईदर ऑफ द independent state, that is independent country, whether it be if you want to join Pakistan, if you want to join India or you want to become independent, वो तुम कर सकते हो. So this was the one of the biggest challenge. Why for India? Because the princely state into the Indian Union उनको include करना जरूरी था. There were some problems with certain states, like for example Jammu and Kashmir, Hyderabad and Junagadh. Eventually, these came to be resolved. The issue of Jammu and Kashmir experienced the first conflict with Pakistan. जब ये first conflict हुआ था, that was in 1947. The main purpose was continuing to remain the challenging to peace and stability in this region. ये जरूरी था क्यों? बिकॉज इंक्लूड करना जरूरी था. एंड सबसे पहले कश्मीर इश्यू 1947 से स्टार्ट हुआ. पाकिस्तान ने बोला कश्मीर हमारे साथ रहेगा, हमारे में इंक्लूड होगा. दूसरे साइड पे इंडिया ने बोला हमारे साथ रहेगा. कश्मीर को पूछा तो वहां पे जो किंग था, वहां पे जो राजा था, हरि सिंह, ही वांटेड हिज ओन ऑटोनॉमस रूल. उनको खुद का रूल चाहिए था. Later on, in the northeast Nagaland had posed some of the problems that was eventually resolved. Some other colonial areas controlled by the Portuguese and French eventually became part of Indian Union. Independence मिलने के बाद there were many such areas जहाँ पे like Portuguese और French rule वैसे का वैसा ही था. सो यहाँ पे उनको इंडियन यूनियन में इंक्लूड करना जरूरी था. सो बाय 1960s everyone, मतलब these union now were included up as a part of Indian Union. India crafted its policy of political and socio-cultural development within the framework of Indian Constitution. So as the Constitution was made, according to that, जितने भी यूनियन है, जितने भी स्टेट्स है, वो सब इसमें इंक्लूड होने चाहिए थे. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी मतलब क्या? डिफरेंसेस. People from different regions, do they stay together in India? Yes. Do they follow same religion? No. Do they speak same language? No. Do they belong to same region? No. But then do they live peacefully? Yes. इसको बोलते हैं diversity. And ये diversity था with respect to religion, with respect to language, with respect to certain need for social transformation. This came across by incorporating social welfare provisions, which was there for everyone. That is, तुम कोई भी religion के हो, Constitution में ये लिखा है that everybody will be working or everybody will be treated equally. On this economic front, the path of development was laid out with a predominant role of the government in the industrial sector within a policy of mixed economy. अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था in the previous chapters, सबसे पहले हमने देखा था history में, there was we studied about one part, that is Second World War came to an end in 1945. After Second World War came to an end, there was an inclusion किसका? कि भाई यहाँ पे डिवीजन हुआ था इनटू माइंडसेट. एक साइड पे था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेड बाय यूएसए एंड उसको फॉलो करने वाले कंट्रीज. दूसरे साइड पे था कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड यूएसएसआर उसका लीडर और उसके फॉलो करने वाले बहुत सारे कंट्रीज थे. बट इंडिया ने वो टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी चुना था. दैट इज वाई द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप. यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंस किसको दिया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बिकॉज यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी बना रहे थे. मतलब ना ही हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे, ना हेट कर रहे, ना ही कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे, हेट कर रहे, बट वी आर मेकिंग आवर ओन. याद आया नॉन अलाइंड मूवमेंट? वही था.
So the planning commission was set up to prepare 5-year plans, and वहां से start हुए 5-year plans which would indicate directions in which Indian economy should have. जैसे for example first 5-year plan में importance दिया था to agriculture 1951 से लेके 5 years तक. उसके बाद सेकेंड 5-year प्लान आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया. थर्ड 5-year प्लान में दोनों का बैलेंस दिया कि भाई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ में हम लोगों को बैलेंस करना है. The basic focus of Indian planning was economic growth and generation of employment opportunities. ज्यादा से ज्यादा लोगों को employment opportunities मिलना चाहिए. Also, the third important factor was economic growth हुआ, employment हुआ, मतलब सबका standard of living बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा. That is why the removal of poverty was the next part. मतलब standard of living बढ़ा तो गरीबी कम होएगा कि बढ़ेगा? Obviously कम हो जाएगा. So today the Niti Aayog has replaced the Planning Commission. There are new challenges which emerged in 1960s. The Nehru era of Indian politics ended with Lal Bahadur Shastri taking over the premiership. 1947 से लेके 1964 तक Pandit Jawaharlal Nehru was a prime minister. But after that, who was the next prime minister? Lal Bahadur Shastri. So Lal Bahadur Shastri took over the premiership, that is being the supreme leader, that is the prime minister of our country. And उनके बाद कौन था? That was Mrs. Indira Gandhi. This decade saw the growth of regional parties in the political sense, and यहाँ पे regional political parties का importance बढ़ने लगा. क्यों? Because after 1960s to 1970s बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे parties थे which came into existence and said that we are going to control, rather we are going to support the real party or the original party, which is originally मतलब national party. The 1960s also saw the beginning of the protest movement by the peasant class labeled as Naxalism या नक्सलवाद जिसको बोलते हैं. Naxalism originally, remember students, Naxalism या नक्सलवादी जिसको बोलते हैं, वो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था विथ वन मोटिव कि भाई वो पेजेंट्स मूवमेंट था. पेजेंट्स मतलब फार्मर्स मूवमेंट था. उनका डिमांड सिक्योर करने के लिए उन्होंने फाइट बैक किया था. बट लेटर ऑन ये डिमांड्स इतना बढ़ गया था दैट इट वेंट अगेंस्ट एवरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आज टेररिज्म का फॉर्म ले चुका है नक्सलिज्म, ओरिजिनली जब भी चालू हुआ था वो वैसा नहीं था. This movement grew in the 60s but was curbed, that is restricted. Curbed matlab restricted by the state in the early 70s. However, it came back in the more violent way in 1980s. This was described as one of the biggest challenge faced by Indians. उसके बाद another challenge which came across, अच्छा ये किधर था? नक्सलवादी, नक्सलिज्म किधर था? एक जगह का नाम था नक्सलबारी. नबी ये जगह जो था इट कंप्राइजेस मतलब वहां से वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आया, वेस्ट बंगाल, वहां से वो स्टार्ट हुआ था. मतलब ये सब चालू हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, बराबर. अभी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे चालू हुआ था. इट कंप्राइज, नॉर्थ ईस्टर्न का बात करें तो दीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ 8 states, is culturally and ethnically divided, having more than 200 ethnic groups which have distinct language, dialects and socio-cultural identities. Hence, the maintenance of peace and stability and ensuring the implementation of economic and industrial development has been a greatest challenge for the Indian political system. ये Indian political system का क्यों greatest challenge था? Because economy develop करना है. economy कैसे develop करेंगे? Through industrialization. So states like Nagaland have seen a conflict since Indian independence, while Mizoram, Manipur, Meghalaya and Tripura have witnessed militancy since the 60s. In Assam, the problem was about the lack of development of the region with its resources being diverted elsewhere. आसाम में डेवलपमेंट लैक हो रहा था, नो डाउट, बट रिसोर्सेज क्यों हो रहा था? बिकॉज जो उनको रिसोर्सेज, जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए था वो हर एक जगह पे डाइवर्ट हो रहा था, हर एक जगह पे स्प्रेड हो रहा था. द आसाम ब्लॉकेड, द आसाम ऑयल ब्लॉकेड was one of the first agitation that focused on the demand for economic development of the region. Later on, Jharkhand agitation followed the same logic. The democratic system of governance of India was suspended for a brief period. मतलब यहाँ पे democracy वो time पे stop किया था. क्यों? Because agitation चालू हुआ, fight back चालू हुआ. Fight back किसका चालू हुआ? Of the local people. This was the time of 1970s when emergency was declared. Emergency was declared 1974. The influx of refugees from East Pakistan had begun in the late 60s. It escalated in the 1970s and eventually leading to a conflict and the creation of a new state of Bangladesh.
The other crisis that grew into a major confrontation was the demand for Khalistan state of Punjab. अभी ये एक क्राइसिस चल रहा था जहां पे 1970, अच्छा सबसे पहले तो 1970s के डेकेड में, 1970 टू 80 के डेकेड में बहुत चेंजेस आया था. लाइक फॉर एग्जांपल इमरजेंसी क्रिएट हुआ. 1971 में हम लोगों ने देखा था इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, वेयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस विच वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. वही टाइम पे खालिस्तान मूवमेंट चालू हुआ था इन द स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब इंडिपेंडेंट खालिस्तान करके एक कंट्री चाहिए था. एंड वो डिमांड क्रिएट हुआ था अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट कि हमको हमारा इंडिपेंडेंट खालिस्तान चाहिए. This agitation forced the Indian government to use force against the separatist movement. Now ऐसे जितने भी separatist movement थे, मतलब violent movement थे, separatist मतलब जो violence create करते हैं, वो movements के against वो लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट ने फाइट बैक किया. बट उसका रिजल्ट रिटर्न आया. क्या? The assassination of Prime Minister Indira Gandhi was the first such political assassination, a direct result of the use of force to tackle the Punjab agitation. ये फर्स्ट ब्लो था. सेकेंड ब्लो क्या था? द सेकेंड सच assassination was of Rajiv Gandhi, who lost his life to a suicide attack by LTTE, that is Liberation Tigers of Tamil Eelam. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था who had taken the responsibility. ये किधर का था? अच्छा ये श्रीलंका का था. एंड they were fighting for the, मतलब राजीव गांधी ने बोला था वो टाइम पे, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इन 1980s, उन्होंने ये चीज बोला था कि वी आर फाइटिंग, वी आर बेसिकली वर्किंग टूवर्ड्स टॉकिंग टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट. किसके लिए? फॉर द राइट्स ऑफ द तमिल पीपल इन श्रीलंका. तो वो टाइम पे LTTE करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था हु हैड असैसिनेटेड थ्रू ह्यूमन बॉम्ब, सुसाइड अटैक हुआ था राजीव गांधी का असैसिनेशन प्लान करने के लिए. The religious conflict of India escalated in the 1980s also. The events of Ayodhya, Ram Janmabhoomi, Babri Masjid dispute, ये जो चल रहा था उसकी वजह से भी there were many repercussions which have come across in 1992 in the form, मतलब ये जो प्रॉब्लम हुआ था उसका repercussion, उसका आफ्टर इफेक्ट किधर देखा? in the form of Mumbai riots that came across, brought in a new dimension to militancy in India. मतलब there were many challenges in front of our Indian government. The late 1980s and 1990s once again brought the problem of Jammu and Kashmir in the forefront. The agitation saw in the nature of militancy that shifted from a state-centric terrorist activity to a modern abstract terrorist struggle. मतलब आज के जमाने में जब ये टेररिस्ट स्ट्रगल देखे, इट वॉज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब ये कश्मीर वैली का क्वेश्चन आया था, देयर वर सो मेनी कश्मीरी पंडित्स हु वर रिमूव्ड, हु वर told to just leave their houses and just go away from that Kashmir valley. Militancy started the Kashmir valley with the movement for Azadi. India went into economic transformation in the 1990s. 1990s में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? हम लोगों ने पहले बचपन में ये पढ़ा था हिस्ट्री एंड सिविक्स में. ग्लोबलाइजेशन नाम सुना रहेगा. Globalization. It slowly abandoned the socialistic pattern of economic development and opted for economic liberalization. Liberalization कैसा है? What is liberalization? Freedom. Freedom मतलब क्या? Freedom मतलब यहाँ पे लोगों को importance दिया था. With respect to freedom, तुम जाके दूसरे कंट्री में ट्रेड कर सकते हो. Simple. This was a new approach. This was a new approach to tackle the problem of economic development in India. अच्छा वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह. 1991 के बाद टोटल चेंज. क्यों? बिकॉज वो टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था. सो टोटल चेंज. An approach that led to economic recovery and a relatively high and stable economic growth came across. So over the last decade and more, there have been several issues that have posed a challenge to peace and stability in India. These issues have been in the areas of economic development, social and cultural problems. Challenges are also faced due to caste and religious unrest, extreme form of regionalism कि भाई मेरा रीजन तेरे से ज्यादा डेवलप्ड है. ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना चाहिए बट रीजनल इक्वालिटी भी होना चाहिए. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो था वो भी खत्म करना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज था. Along with that, this chapter looks at some of the issues that have continued to be a matter of concern for the peace and stability, and therefore
affect the process of socio-economic development in India. So these issues have also posed a challenge in the process of nation building and national integration of the country. These issues include, like for example, cross-border terrorism, जो चल रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन सर्टेन एरियाज एंड ऑल्सो terrorism. So what was it all about? Let us learn. My side, dear students, take care, stay home, stay blessed. All the best. Like, share, comment and subscribe to the YouTube channel. Bye bye.